Good evening, everyone. I hope I'm audible to all of you. Okay, so Adarsh, Jasulankar, Kanika, Manu Walia, Prapti Bansal, Prerna, Ravneet Kaur, then we have Sonam and Swatigri. Okay, that's all right. Okay, so friends, today the webcam is not working. Okay, there may be some technical issue. Okay, so I mean, I will not be visible throughout the class today. Like we are facing some technical issue, like with reference to camera. Okay, so camera will not be visible. I tried to make myself, like available online. Okay, but the thing is, camera is not visible. Okay, Adarsh, is that all right? Adarsh. ओके दैट्स ऑल राइट. सो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ नोन एज संगम पीरियड. ठीक है, हम संगम पीरियड को समझेंगे. वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द संगम पीरियड टुडे. तो देखते हैं संगम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज कवर करना है. ठीक है, एंड हमारे पास बहुत कम टाइम है एंड लाइक वी वांट टू कवर लॉट ऑफ टॉपिक्स. ठीक है, आज ऑलमोस्ट 20 स्लाइड्स है, 20 या मोर देन 20. ठीक है, सो वी हैव टू कवर विद इन 1 आवर. सो लेट अस बिगिन. ओके, सो संगम पीरियड हम क्यों बोलते हैं तमिल संगम को. ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस व्हाई दिस इज नोन एज संगम पीरियड. हम इसको संगम पीरियड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वो वाला पीरियड है, ठीक है, जिस पीरियड की हिस्ट्री हमें कुछ संगम लिटरेचर से मिलती है. वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड फ्रॉम सम ऑफ द लिटरेचर्स. ठीक है, दीज लिटरेचर्स आर नोन एज संगम लिटरेचर. कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ लिटरेचर सोर्सेज से हमें इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. ठीक है, उन लाइब्रेरी सोर्सेज को बोलते हैं संगम लिटरेचर. ठीक है, और इसीलिए इस टाइम पीरियड को हम संगम पीरियड बोलते हैं. ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड एज संगम पीरियड. ठीक है, तो अगर हम संगम पीरियड के बारे में समझने की कोशिश करें तो संगम पीरियड जनरली लाइक इसका जो टाइम पीरियड है इसमें बहुत सारा देर आर लॉट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस. कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड है, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड है. ठीक है, सो ये जो टाइम पीरियड वाला चीज़ है संगम पीरियड को लेके थोड़ा वाइडली दिस इज लिटिल बिट डिबेटेड टॉपिक. लेकिन जनरली ये माना जाता है कि ये 3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD के बीच में है. ठीक है, कौन सा 3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD. ठीक है, इस पीरियड के दौरान जो भी चीज़ें हुई थी, ठीक है, साउथ इंडिया में वो संगम पीरियड में आता है. ठीक है, तो ऑलमोस्ट इट इज़ ऑलमोस्ट 600 ईयर्स. ठीक है, ऑलमोस्ट 600 ईयर्स का मतलब ये टाइम पीरियड है. बेसिकली हमने इससे पहले जितने भी पढ़े, ठीक है, वी हैव स्टडीड अबाउट मौर्यास, वी हैव स्टडीड अबाउट लाइक सम अदर किंगडम्स ऑल्सो. तो उसमें हमने देखा था कि उन लोगों ने जो रूल किया था, दे हैव रूल्ड इन द नॉर्दर्न इंडिया. उन्होंने क्या किया, नॉर्दर्न इंडिया में रूल किया. तो नन ऑफ देम एक्चुअली रूल्ड ओवर दिस पर्टिकुलर टेरिटरी. जो एकदम एक्सट्रीम साउथ में जो टेरिटरीज हैं, ठीक है, वहाँ पे वो नॉर्दर्न किंगडम जो बहुत पावरफुल थे, गुप्तास थे एंड हमारे पास मौर्यास थे, उन लोगों ने साउथ सदर्न रीजन में रूल नहीं किया. दे कुड नॉट रूल इन द सदर्न रीजन. ठीक है, तो ये जो सदर्न रीजन है ये कुछ दूसरे टाइप के डायनेस्टीज के कंट्रोल में था एंड उनके कंट्रोल में बहुत लंबे समय तक था. इट वॉज अंडर देयर कंट्रोल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो दिस इज द थिंग. एंड कौन से एरिया में उन्होंने मतलब लाइक रूल किया, द एरिया लाइंग साउथ ऑफ रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा. ठीक है, साउथ इंडिया में 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स है, कृष्णा एंड तुंगभद्रा. लाइक वी हैव अदर रिवर्स ऑल्सो, लेकिन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर के साउथ में, ठीक है, उसके लाइक दक्षिण में जो भी रीजन लाई करता है वो वाला जो है, मतलब वो वाला रीजन एक्चुअली वॉज रूल्ड बाय सम ऑफ द किंगडम्स. ठीक है, संगम पीरियड को जब हम समझेंगे तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स. कौन कौन से किंगडम के बारे में समझेंगे, एक तो समझेंगे हम चोलास के बारे में. ठीक है, इनको हम बोलते हैं चोलास. ठीक है, दूसरा हम समझेंगे चेरास के बारे में. ठीक है, चेरास. एंड थर्ड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट पांड्यास. ओके,
like we are going to understand about Pandyas. ठीक है, Chelas, Chora, like this is Cholas, Cheras and Pandyas. ये 3 टाइप के किंगडम्स है. जैसे फॉर एग्जांपल आप राइट साइड में एक मैप देख पा रहे हो, ठीक है, राइट साइड में मतलब मैप, इसमें देखो चोला लिखा हुआ है, तो चोला कौन सा है, तमिलनाडु वाला रीजन दिख रहा है, ठीक है. जो पांड्यास है चोला के साउथ में है. चेरास कौन से हैं, जो केरला वाला रीजन है ना आजकल का, तो वहां पे रीजन मतलब चेरास ने रूल किया. ओके, सो दिस इज द थिंग. कृतिका हरिहरन, सो आई थिंक कृतिका हैज टू से समथिंग. यस कृतिका, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन. सर नथिंग, गुड इवनिंग. एक्चुअली नेटवर्क इशू था इसलिए थोड़ा लेट हो गई. ओके ओके, दैट्स ओके. ओके, सो अभी है क्या, लाइक हियर आल्सो आई एम फेसिंग सम टेक्निकल इश्यूज. यस प्रेरणा, या आपका वीडियो विजिबल नहीं है सर. हाँ हाँ. Isn't that this region the current day Andhra Pradesh and Telangana? Yeah, like you know, Tamil Nadu would be the Pandyas one, right? Yeah, Tamil Nadu, like you know, ये जो region है basically like they are not coinciding with the present day border, ठीक है. तो but मतलब roughly we can say कि जो चोलास है, ठीक है, तमिलनाडु वाला भी थोड़ा रीजन है, आंध्र प्रदेश का भी थोड़ा रीजन है, लाइक दैट, ठीक है. पांड्यास आर टू द साउथ ऑफ द चोलास, चेरास आर टू द वेस्ट. लेकिन चेरास ने मतलब जो एरिया ऑक्यूपाई किया है, कर्नाटका का भी थोड़ा एरिया है एंड केरला का भी थोड़ा एरिया है, लाइक दैट. ओके, सो दीज बॉर्डर्स. Also sir, why are we specifically calling them Tamil? Basically us, you know, like when we study about, you know, that particular time period, we study through some sources. Like in the beginning classes we discussed about, you know, sources to read history, right? We have discussed about, you know, primary and secondary sources. So sometimes the sources are, you know, numismatics like coins, sometimes these are literary sources like books that might have been compiled at that point of time. So the primary source for us to get the information about the, you know, about the southern kingdoms is the, you know, Sangam literature. Means like, you know, we have found some of the literature of that particular time period, okay. So using those literatures we are able to get their information. So these literatures are known as Sangam literature. That's why, and these literatures are written in, you know, Tamil language, okay. So that's why they are known as Tamil Sangam period, or like, you know, these are known as like Sangam period. That's the thing, because of the literature, okay, we are getting the information through literatures, and that's why we have given that particular, you know, history or name of that particular history as Sangam period. Prerna, is that clear? Yes sir, got it. Okay, so basically it is because of the, you know, sources from where we get the information about, you know, the southern kingdoms, okay. In sources से हमें पता लगता है. So these sources are themselves known as Sangams, ठीक है. What are Sangams? We will discuss about Sangams also, कि संगम होते क्या है. Basically when, you know, many poets and, you know, like these literary people meet together, they discuss on particular issues and they compile those works. So you know, those things were called as Sangams, ठीक है. उन चीज़ों को संगम बोला गया है. एंड फ्रॉम द लाइटरेरी सोर्सेज वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट 3 सच पीरियड्स, की मतलब लाइक देयर वर, यू नो, 3 सच एमलगेमेशन और लाइक, यू नो, कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पोएट्स. So that's why, you know, we have 3 संगम्स. We will understand about these संगम्स. तो अभी तक हमने क्या समझा कि जो साउथ इंडिया का जो, you know, जो किंगडम है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है लाइटरेरी सोर्सेज से. लाइटरेरी मतलब जो बुक्स वगैरह लिखी गई थी उस टाइम पे, उन सोर्सेज से हमें इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, और वहीं से इस पीरियड को नाम दिया गया है बिकॉज ऑफ द लाइटरेरी सोर्सेज, ठीक है. एंड इसका जो टाइम पीरियड है, इट इज़ वाइडली डिबेटेड अमंग हिस्टोरियंस, एंड टाइम पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड फ्रॉम द 3rd century BC to 3rd century AD, ठीक है. एंड like when we are studying about the history of the Sangam period, we are studying about, you know, the region which lies to the south of the Krishna river and Tungabhadra river, and
and this particular territory, like or this particular kingdom, these kingdoms actually flourished during the reign of the Pandyas, although there were Cheras, Cholas and Pandyas, लेकिन ये जो है Pandyas के period में, okay, during the Pandya period, these literary sources became more prominent because Pandyas were the ones who had patronized it more. Pandyas ने ज़्यादा patronize किया ये literary amalgamation को, like where these people can get together, they can discuss on some of the literary works, they can compile the things. So these were patronized mostly by the Pandyas. Okay, so it is considered that these kingdoms actually flourished during the time period of Pandyas. Okay, so there are three Sangams. Okay, there are three Sangams: first Sangam, second Sangam and third Sangam. Okay, first Sangam was held at Madurai. ठीक है, कहाँ पे हुआ था फर्स्ट संगम? मदुराई इज द नेम ऑफ अ प्लेस. ओके, एंड फर्स्ट संगम was held at Madurai. Third Sangam was also held at Madurai. Okay, first and third Sangams were held at Madurai. Second Sangam was held at a place which is known as Kapadapuram. Okay, it is known as Kapadapuram. First Sangam Madurai, second Sangam Kapadapuram, third Sangam again Madurai. Okay, so the thing is, when we talk about first Sangam, like we were not able to get any literary sources of the first Sangam period. It is considered that all the literary sources that might have been compiled during the first Sangam was lost. Okay, ये माना जाता है कि जो फर्स्ट संगम के दौरान जो भी हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस है, ठीक है, those were lost. So we do not have any literary work available presently with us. ठीक है, when we talk about the second Sangam period, ठीक है, most of the literary work has already perished, and like we are left with only one literary work which is known as Tolkappiyam. Okay, so Tolkappiyam is one of the literary work that is still surviving. Okay, and it belongs to the second Sangam period. ठीक है, so second Sangam period का एक compilation of work हमें अभी भी मिलता है, that is known as Tolkappiyam. Okay, when we talk about the third Sangam period, it was held at Madurai, and like we have voluminous, मतलब हमारे पास बहुत सारे literary sources available है थर्ड संगम पीरियड का. ठीक है, थर्ड संगम का. So voluminous literature produced, but only few survived. ठीक है, बहुत सारे प्रोड्यूस किए गए थे. Like we have still many sources with us. Okay, and these sources are from the third Sangam period. ठीक है, फर्स्ट संगम पीरियड का कोई भी ऐसा literary source नहीं है that we could revive or we could find. ठीक है, from second Sangam period we have an important literary work that is known as Tolkappiyam, and from the third Sangam period we have got many works, and we will discuss about those works in the in today's lecture itself, in the later portion of the lecture. Okay, so is that all right? Is everything understood? नेहा, क्या आपको समझ में आया? Neha, did you understand? Okay, everyone, just let me know if it is all right. Like whatever we have discussed till now, it is just an introduction. Okay, it is just an introduction about Sangam period. We have lot more to cover in today's class. Okay, just this thing. Okay, now let us move to the second part. Now we will talk about those literary sources, those literatures that have been recovered from the Sangam period. मतलब ऐसे literary sources जो हमें मिला है, and यहीं से हमें information मिलता है संगम period के बारे में. Okay, so these literary sources are Tolkappiyam, okay, then Ettu Togai, then we have Pattu, then we have Pathi. This is known as Pathinen Kilkanakku. Okay, it is also known as Kilkanakku. Pathinen Kilkanakku. Then we have Silapathikaram. Okay, Silapathikaram. Then we have Mani Megalai. Okay, Mani Megalai. So these are the literary sources that are available with us that gives us information about the Sangam period. Okay, these are the literary sources. Number one is Tolkappiyam. Then we have Ettu Togai. Then we have Pattu. Then we have Pathi Nen Kilkanakku, then we have Silapathikaram, and we have Mani Megalai. Okay, so these are some of the important literary sources that are available with us.
Okay, so Riya Pathak has asked a question, are these important? Yes, these are important. ये जो मैंने नाम अभी underline किया है, ठीक है, the names that I have underlined, it is very important for you to remember these names. Okay, इन नाम को आपको ध्यान रखना. ये जो 6 नाम मैंने बताया, कौन से? तोलकापियम, एट्टुटोगई, then पट्टू, then we have like Pathin Kilkanakku, we have Sila Pathikaram, and we have Mani Megale. Okay, so these are the things. हो सकता है कि I may not be pronouncing it in the best way that like people from the south region can pronounce, but the thing is, this is how I can pronounce this thing. Okay, so there may be some people who are from South India, they may pronounce it little better. Okay, so like so the thing is, you just need to understand these things कि ये जो 6 वर्क है, you have to remember their names. ठीक है, when we talk about Tolkappiyam, okay, so we have already discussed that Tolkappiyam actually, you know, was a literary work that belongs to the second Sangam period. Okay, that belongs to the second Sangam period. क्या है तोलकापियम? क्या है? सेकेंड संगम पीरियड का लिटरेरी वर्क है जो अभी तक अवेलेबल है हमारे पास. ठीक है, देन व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर? ओके, नेम ऑफ द ऑथर इज Tolkappiyar. Okay, name of the author is Tolkappiyar. Okay, name of the author of Tolkappiyam is Tolkappiyar. What it is about? ये किसके बारे में है? अगर हम तोलकापियम के बारे में बात कर रहे हैं, so what it is about? Basically it is considered as the earliest of the Tamil literary work. इसको क्या माना जाता है कि तमिल में जो भी लिटरेचर लिखा गया था, ठीक है, उन लिटरेचर्स में से सबसे पुराने लिटरेचर में से एक है क्या? तोलकापियम. ओके, Tolkappiyam is among the earliest work, okay, of the Tamil literature. Okay, Tolkappiyam is among the earliest literary work of the Tamil literature. ये आपको ध्यान रखना है. And it belongs to the second Sangam. Okay, it belongs to the second Sangam. ठीक है, second Sangam से belong करता है. And it also provides insights on the political and socio-economic conditions of the time. ठीक है, तोलकापियम से हमें उस समय का पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में पता लगता है, हमें उस टाइम का या उस समय का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता लगता है. मतलब वहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स कैसी थी, वहाँ का सोसाइटी कैसा था, वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थे. ठीक है, वी गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम तोलकापियम. ओके, सो तोलकापियम इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स. इट इज फ्रॉम द सेकेंड, you know, second Sangam. Now, before I move to discuss about other, you know, literary sources, I have a question for you. Let me see how many of you can answer. Okay, what is the location where the second Sangam was held? What is the name of the location where second Sangam was held? Can any one of you tell me? Okay, what is the name of the location where second Sangam was held? ठीक है, उस लोकेशन का नाम क्या है जहां पे सेकंड संगम हुआ था. ओके, संगम मतलब लाइक बहुत सारे कवि मिलते हैं वहां पे, वो कुछ लिखते हैं लाइक दैट. कपाटपुरम सर. ओके, या सोनम हैज आंसर्ड इट राइट. ओके, सो इट इज like Kapadapuram or Kapadpuram. Okay, means like, you know, I am from North India. Basically I am from Northeast India. Okay, so like for me it may be little difficult, so it is like Kapadpuram, as Sonam said. Okay, it is Kapadpuram. Okay, this is the thing. Okay, can any one of you tell me, okay, any one of you tell me, like where were the first and third Sangam held? ठीक है, for first and third Sangam कहाँ पे मदुरई हुआ था? Okay, Sonam is very active today. She might have had Horlicks and Boost. That's good. Okay, ठीक है, Madurai. That's good. Okay, so Riya, Kanika, Manu Walia, Ravneet, Swati Giri, Prapti and Neha, all of you have answered it right. Okay, Swati is typing something. Okay, like I have one more question from you. Okay, why this particular time period is known as Sangam period? इसको Sangam period क्यों बोला जाता है? Anyone? Answer me in the shortest possible words, or you can unmute yourself and tell me the answer. Because we get to know about it from the Sangam literature. Okay, Prerna was very right and she was very precise and her voice is also very sweet. Okay,
So you have answered it in the best possible manner, Prerna. Okay, because we get the information about this particular period from the Sangam literature. That's why it is known as Sangam period. Okay. Now, so let us understand about the second, this literary source, which is known as Ettu Togai. Okay, Ettu Togai. So Ettu Togai, basically it is a compilation of many, literary works. Okay, many literary works. These are not in book format. Basically, like it is compilation of many literary works. It consists of 8 works. How many works? 8 works. And these 8 works are written over here. Okay, I'm not going to pronounce it for you, because for me it is very difficult to pronounce. आपको in like you don't have to remember all these names, but ये जो first के 6 names है इनको आपको याद करना है, बस थोड़ा सा आपको समझना है. Otherwise I have listed all these names for you. It is very difficult for me to pronounce. That's why I am not pronouncing it for you. Okay, so I hope you understand. Okay, so the thing is, Ettu Togai consists of 8 works. That is Ain Guru Nuru. Okay, this is Ain Guru Nuru, then Narinai, then Aganuru, okay, then like Purana Nuru, then we have Kurun Togai, we have Kali Togai, we have Paripadal, and we have like Padiru Pattu, okay, Padiru Pattu. So these are the 8 literary sources. Okay, so this Ettu Togai actually is a compilation of 8 different works, and these are the 8 different works. Okay. Then when we talk about the Pattu Pattu, okay, when we talk about Pattu Pattu, it consists of 10 works. Similarly, ये जो 10 works है, इनके नाम यहाँ पे मैंने list किया हुआ है. These are the names of the 10 works, that are part of the Pattu Pattu. ठीक है? Pattu Pattu is a Sangam literature work. Then after this we have Pathinen Kilkanakku. Okay, this is Pathinen Kilkanakku. Okay, this Pathinen Kilkanakku actually consists of 8 works about ethics and morals. Not 8, it is 18. Okay, it consists of 18 works about ethics and morals. Okay, it is the most important among these works. Okay, the most important among these works is Tirukkural. Okay, एक work है जिसका नाम है Tirukkural. ठीक है, Tirukkural is a part of Pathinen Kilkanakku, and this Tirukkural is authored by Thiruvalluvar. Okay, it is authored by Thiruvalluvar. You might have noticed that whenever the Finance Minister of India, Nirmala Sitharaman, okay, produces any kind of budget, like budget speech, when she gives budget speech, okay, she always try to quote some of the things that have been written by Thiruvalluvar. Recently she has talked about 5 principles, 5 things that makes up a state. Okay, 5 things that makes up a state, while she was giving a presentation on budget, recent budget. Okay, so that's the thing. So Thiruvalluvar is a very important figure. Okay, very important personality. Okay, he is important because he has written like Tirukkural. Okay, and Tirukkural is a part of this Pathinen Kilkanakku. It is a part of Pathinen Kilkanakku. ठीक है, इसके बाद we have another source जिसको हम बोलते हैं शिलापथिकरम. Okay, it is known as शिलापथिकरम, and इस शिलापथिकरम को किसने लिखा था? Its author is he is Ilango Adigal. Okay, Ilango Adigal. Ilango Adigal is the person who has authored Silapathikaram. Okay, then we have another important source which is known as Mani Meghalai. ठीक है, ये जो चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे पथिनेन किल्कानक्कू, मनी मेघालय, शिलापथिकरम, these are very important sources. Many times in examinations you will find that these name of these sources are written and they have asked the name of the author. ठीक है, मतलब उन्होंने मान लो लिखा हुआ है कि this Mani Meghalai was written by which of the following authors. You may be given option like Tholkappiyar, Ilango Adigal, then Sittalai Sattanar, like that. Okay, so इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइब्रेरी वर्क है इनके नाम याद रखने हैं आपको पहले तो, और बाद में जहाँ जहाँ ऑथर के इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनको भी आपको याद करना है. ठीक है, सो when we talk about this Silapathikaram, it was written by Ilango Adigal. Okay, and when we talk about Mani Meghalai, it is authored by Sittalai Sattanar. Okay, it is authored by Sittalai Sattanar. That's the thing. Okay, so is that all right? Is that clear? All of it that I have discussed till now, everyone? प्रेरणा आपको समझ में आया?
Okay, that's all right. Okay, it's good that you are understanding, like you are able to follow. It's a really good thing that, like, you know, you are able to follow, because, like, you know, these are some of the difficult things people consider, but it's not that difficult. Okay, बहुत easy है, बस you just need to be attentive. ठीक है, थोड़ा सा attention रखना है क्लास में when we are discussing. If you come across any questions, any doubt, you can ask me anytime. You just need to unmute yourself. Okay. आदर्श ने लिखा है क्लियर सर, बट नेम थोड़ा टिपिकल है सर, हाउ टू मेमोराइज दीज वर्ड्स. ओके आदर्श, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये राइट साइड में ये जितने भी है ना 8 मेजर वर्क्स, 10 वर्क्स, 18 वर्क्स, इनको याद नहीं रखना है. आपको क्या याद रखना है, ये जो 6 लेफ्ट साइड में है ना, इनको याद करना है. जैसे तोल्कापियम, इनके ऑथर है तोल्कापियर. ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. तोल्कापियम, तोल्कापियर. ठीक है, जब हम बात करते हैं शिलापथिकरम, इट्स ऑथर इज इलांगो अडिकल. When we talk about Manimegalai, its author is like Sittalai Sattanar. Okay, like that. इन 6 वर्क्स के नाम याद रखना है, और ये याद रखना है ये संगम लिटरेचर के, ठीक है, संगम पीरियड के दौरान लिखे गए लिटरेचर्स है. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट दीज लिटरेचर्स आर रिटन ड्यूरिंग दी संगम पीरियड इटसेल्फ. ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है आपको. यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस ऑल्सो, एंड रिमेंबरिंग इज अनदर, यू नो, ह्यूज टास्क. ठीक है, उतना याद भी नहीं करना. दे डोंट आस्क, यू नो, दैट डीप क्वेश्चंस. ओके, सो दैट्स द थिंग. नाउ लेट अस मूव फर्दर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द संगम पीरियड. ठीक है, जैसे हमने देखा, ठीक है, संगम पीरियड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं. जैसे एक तो है चेरास. चेरास को नंबर 1 कर देता हूं मैं. चोलास को नंबर 2 कर देता हूं. ठीक है, पांड्यास को नंबर 3. ठीक है, पांड्यास मतलब ये जो येलो कलर का, चेरा जो मतलब लाइक आई डोंट नो, इट इज ब्लू टाइप. ठीक है, शायद कुछ और नाम बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज चेरास. चेरास के अगर यहाँ पे आप देखो, लाइक व्हाट इज द, यू नो, सिंबल इन देयर फ्लैग, इट इज लाइक बो एंड एरो. ठीक है, ये बो एंड एरो मतलब लाइक तीर कमान वाली जो चीजें हैं, ये चेरास के वो है, क्या बोलते हैं, सिंबल है. दिस इज देयर सिंबल इन देयर फ्लैग. ठीक है, चोलास के बारे में बात करें तो इट इज टाइगर. ठीक है, चोलास के जो वो हैं, क्या बोलते हैं, सिंबल, बेसिकली इट इज टाइगर. ठीक है, पांड्यास के बारे में बात करें तो इट इज, यू नो, फिश. फिश मतलब मछली. वाई फिश? क्योंकि पांड्यास एक्चुअली, यू नो, बहुत सदर्न रीजन में थे, एंड दे वर वेरी मच क्लोजर टू द, यू नो, सी शोर एरिया. सो, यू नो, देयर इकोनॉमी डिपेंडेंट, यू नो, टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट ऑन फिशिंग. ठीक है, इसीलिए वो फिश को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, लाइक दैट. ओके, सो चेरास के साथ कौन सा सिंबल एसोसिएटेड है, बो एंड एरो मतलब तीर कमान. चोलास के साथ क्या एसोसिएटेड है, टाइगर. ठीक है, पांड्यास के साथ क्या है, फिश. फिश मतलब मछली. ओके, दीज आर द थिंग्स. So now when we discuss about the political history, okay, of the Sangam period, so during the Sangam age, South India was ruled by 3 dynasties. Okay, during the Sangam age, South India was ruled by 3 dynasties. What are these dynasties? Number 1 Cheras, number 2 Cholas, okay, number 3 the Pandyas. Okay, these were the 3 dynasties, and the main source of information about these kingdoms is traced from the literary references of Sangam period. मतलब इन जो रूलर्स थे, ये साउथ इंडियन जो रूलर्स थे, इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, हमें लाइटरेरी सोर्सेज से मिलती है. लिटरेचर वर्क जो लिखा गया था उस टाइम पे, वहाँ से हमें इन तीनों किंगडम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. ओके, वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज 3 किंगडम्स फ्रॉम द लाइटरेरी सोर्सेज दैट वर रिटन ड्यूरिंग द संगम पीरियड. ओके, सो इज दैट ऑल राइट? इज एवरीथिंग अंडरस्टूड? ओके, so everyone just let me know. नेहा, आपको समझ में आया? नेहा, did you understand? Okay, so let us move to the next topic now. Okay, so before we discuss the you know, second thing, can any one of you tell me, like when we discuss about Cheras, Cheras के साथ कौन सा symbol associated है, like what was their symbol? Cheras के symbol क्या है? Okay, everyone just let me know what is the symbol Cheras के लिए. Okay, there are 5 to 6 people who are very consistent in answering. Manu Walia, bow and arrow, Riya Pathak, Prapti Bansal, Swati Giri, Adarsh and Neha. Okay, apart from this, what is the symbol that is associated with Pandyas? Pandyas के साथ क्या associated है? Okay,
Okay, now many people are answering. Okay, Riya, Ravneet, Kritika, Manu Walia, Adarsh, Jasulankar, Swati, Neha, Prapti, Pallavi. Neha has answered twice actually. Maybe you know two Nehas may be there. No, only one Neha is there in the class. Fish कहेंगे या टू फिश कहेंगे, फिश कहेंगे सिंपली. ओके, फिश एक्चुअली ना प्लूरल सिंगुलर शायद एक ही वर्ड होता है फिश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, आई एम नॉट दैट गुड इन इंग्लिश, बट लाइक आई थिंक सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है फिश के लिए. फिशेस नहीं बोलते शायद, यू नो, वी से इट टू बी फिश इटसेल्फ. okay, if I'm not wrong, I mean I'm not that good in English, but this is the thing. Okay, so fish बोलेंगे हम, that's all right. So अभी हम क्या करते हैं, let us understand about चेरास. चेरास के बारे में समझेंगे. हमने नंबर किया था ना, नंबर 1 चेरास, नंबर 2 चोलास, नंबर 3 पांड्यास. So now we are going to study about चेरास. ठीक है, इनके साथ क्या है, बो एंड एरो वाला. ठीक है, बो एंड एरो. ठीक है, या फिर सिंपली बो भी बोल सकते हैं. ठीक है, बो एंड एरो इज एसोसिएटेड विद देम. ठीक है, सो दे रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे केरला. जो अभी केरला स्टेट है उसके कुछ पार्ट में इन्होंने रूल किया. दे रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे केरला. और इनका कैपिटल कहाँ पे था, देयर कैपिटल वाज लोकेटेड एट वंजी. कहाँ पे, देयर कैपिटल वाज लोकेटेड एट वंजी. ओके, देन अगर हम बात करें इनके इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स के बारे में. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, मतलब जो लाइक दे आर वेरी नियर टू द सी शोर. ठीक है, सी शोर में अगर कोई शिप आ रही है तो शिप आके कहाँ पे रुकेगी. ठीक है, और कहाँ से शिप जाएंगे. ठीक है, दैट इज नोन एज सी पोर्ट. ओके, दैट इज नोन एज सी पोर्ट. जैसे एयरपोर्ट होता है ना, ऐसे सी पोर्ट होता है. आदर्श हैज आंसर्ड बंदरगाह. यस, बंदरगाह इज द राइट वर्ड लाइक दैट वी यूज इन हिंदी. ओके, सो मेरा जो वो है, मतलब लाइक यू नो माई वोकेबलरी इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश इज वेरी लिमिटेड. ओके, सो दैट्स द थिंग. सो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स क्या है, टोंडी एंड मुसिरी. ओके, सो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स ओके ऑफ चेरास इज टोंडी एंड मुसिरी. इनके नाम बहुत याद रखने वाली है. यू हैव टू रिमेंबर देयर नेम, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन पुगालुर इंस्क्रिप्शन. ठीक है, एक इंस्क्रिप्शन है दैट इज नोन एज पुगालुर इंस्क्रिप्शन ऑफ द 1st century AD हैज रेफरेंस टू 3 generations ऑफ द चेरा रूलर्स. ठीक है, पुगालुर इंस्क्रिप्शन मतलब लाइक सम इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड एट अ प्लेस दैट इज नोन एज पुगालुर. ठीक है, एंड इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन about 3 generations of Chera rulers. ठीक है, and it belongs to the 1st century AD. Yes, Prerna had a question for me. Prerna, is there anything that you wanted to speak? No, so that. Okay. Okay, that's all right. So your audio is like, you know, it's not coming properly. Okay, so I hope I am clearly audible to all of you. Am I clearly audible? Everyone, just let me know, because it is very important. Yeah, Prerna, your voice is breaking. Maybe, you know, there may be some internet issues, or like your device may not be connected properly with the, you know, this earphone. Yeah. Your voice is breaking, Prerna. Okay, that's all right. So let us discuss about it. Okay, now we are going to discuss about, you know, Padirupattu. Okay, Padirupattu, what it is. Padirupattu is a literary work. Okay, it also provides information of Chera kings. It provides us information of the Chera kings. Okay, I'm really sorry, like, you know, I guess her name is, you know, Prerna. Okay, so Prerna, like, you were not clearly audible to us. Okay, I think like she has gone offline. She'll come online again. Okay, so now let us discuss about Padirupattu. Okay, so Padirupattu actually it also provides information about Chera kings. Okay, we get information about 3 generations of Chera king from Pugalar inscription that belongs to the 1st century AD. Okay, AD stands for Anno Domini. It means in the year of Lord. Okay, it means in the year of Lord. Then when we talk about important rulers, okay, important rulers of the Cheras,
3 of the important rulers name have been written over here. 3 important ruler के नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. First important ruler is Perum Soru Odian Cheralathan. Okay, name of the first ruler is Perum Soru Odian Cheralathan. Okay, name of the second ruler is Imaya Varambam Nedum Cheralathan. Okay, this is the name of the second ruler. Okay, it is not in chronological order, but these are important rulers. मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है यही पहले चेरा किंग थे. I am not saying this. What I am saying is like these are important rulers that like from the cheras. Okay, these were the important rulers from the cheras. तो पहले ruler कौन है important? He is Perum Soru Odian Cheralathan. Okay, second important ruler is Imaya Varamban Nedun Cheralathan. Okay, then third important ruler is Cheran Senguttuvan. Okay, third important ruler is Cheran Senguttuvan. He is considered as the greatest ruler among the cheras. ठीक है, उनको greatest ruler माना जाता है. ठीक है, जैसे we had already discussed कि Ilango Adigal was younger brother of Senguttuvan, and he is the author of Silapathikaram, okay, which includes military expeditions of Senguttuvan. ठीक है, इलांगो अडिकल कौन है? सेंगुट्टुवन के younger brother है. Senguttuvan actually Cheran Senguttuvan is one of the greatest rulers among the cheras. ठीक है, cheras में से एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ग्रेट रूलर कौन है? लाइक चेरन सेंगुट्टुवन. एंड जो इलांगो अडिकल है वो यंगर ब्रदर है, छोटे भाई है किनके? सेंगुट्टुवन के. एंड इलांगो अडिगल ने एक्चुअली बुक लिखा है जिसको हम बोलते हैं सिलापथिकरम. ओके, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था जब हमने डिस्कस किया लाइटरेरी सोर्सेस. 6 इंपॉर्टेंट लाइटरेरी सोर्सेस के मैंने नाम लिखे थे. तो एक है, यस रिया. These are very hard to memorize. How do we do that? I'm sorry, Riya, can you please speak little louder? So like all of these are very hard to memorize. So how do we do that? Okay. So I understood your question. So these are very hard to memorize, right? आपको क्या करना है? Like attend the class, okay? Attend the class with utmost attention, and after the class, just after the class, try to revise from the from the PDF that I share, okay? And like whenever possible, watch this particular class once more if it is possible for you. Okay, नहीं तो आप एक regular like you should make a strategy for revision also. ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? They make a strategy only of reading कि आज मैं ये पढ़ूंगा, आज मैं ये पढ़ूंगी या कल मैं वो पढ़ूंगा. Like that, many of you make strategy for studying the things, but most of you lack in making a strategy in revising the things. क्या करना है? जिस दिन आपने मान लो day 1, I am just writing day 1, you read something, ठीक है. So आज आपने कुछ पढ़ा, कल मॉर्निंग में, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग when you wake up, you just revise that particular thing. Okay, there should be a revision in the shortest period of time आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग. जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के उसे थोड़ा कम टाइम दे के यू रिवाइज. ठीक है, आफ्टर देन व्हाट यू डू, लाइक ऑन सैटरडे और संडे एवरी वीक कीप वन डे इन योर टाइम टेबल जिस दिन आपको सिर्फ रिवाइज करना है. यू हैव टू ओनली रिवाइज. मतलब जैसे मंडे टू फ्राइडे यू आर रीडिंग न्यू थिंग्स. ठीक है, लाइक टुडे यू आर रीडिंग समथिंग, टुमारो मॉर्निंग द मोमेंट यू वेक अप, लाइक यू आर रेडी टू स्टडी, give some time 1 or 2 hours in revising the things that you have studied yesterday. ठीक है, ऐसा आपको करना है in your regular routine. उसके बाद क्या करना है? every Saturday और Sunday keep one day in a week. Generally क्या होता है, like people what they do, हर Saturday को they revise, Monday to Friday they read new things, next day morning को वो revise करते हैं और Saturday को वो revise करते हैं. On Sunday what they do, they make shorter notes of the things that they have studied. ठीक है, और लास्ट मोमेंट में बिफोर एग्जामिनेशन वो जो शॉर्ट नोट होते हैं दे विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग एवरीथिंग दैट यू हैव रेड. ठीक है, इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि मतलब एक दिन बाद आप रिवाइज करो, वीक के एंड में रिवाइज करो और उसके बाद मंथ के एंड में एक बार और रिवाइज करो वट एवर यू हैव स्टडीड थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर मंथ. दैट्स हाउ यू कंसोलिडेट वॉट यू स्टडी.
ठीक है, मतलब दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी दैट आई एम सेइंग टू यू. यू मे अडॉप्ट एनी अदर स्ट्रेटेजी, बट फॉर पीपल लाइक हु थिंक दैट लाइक रिविजन एंड रिमेंबरिंग इज वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क फॉर देम, सो दिस मे हेल्प देम. नेहा, क्या आपको समझ में आया? नेहा, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन क्लियरली? Okay. Ria is asking, actually problem is coming with names. Yeah, names are very difficult. Yeah, I have actually, like, you know, I cannot help with that. I mean, you know, so names are very difficult, even very difficult to pronounce. But I think, you know, one of my closest friend was from South India. Okay, so she made me understand very, you know, new words and all. So that's why I'm able to pronounce most of the words. But like it is very difficult for people who are from northern India. Okay, so this is the thing. So Ilango Adigal was the younger brother of Senguttuvan, and Ilango Adigal has actually, you know, written or compiled this work which is known as Silapathikaram. Okay, then Senguttuvan brought the stone for making the idol of Kannagi. Okay, he brought the stone for making the idol of Kannagi. Kannagi कौन है? Like she is, you know, she is the wife of a person. She is a wife of a person, and that person actually used to work in a court. ठीक है, मतलब like that person was very poor. He used to work, and जो कन्नगी के जो हस्बैंड है, ठीक है, कन्नगी के हस्बैंड को वहाँ के साउथ इंडिया के किसी रूलर ने, ठीक है, रूलर ने क्या बोला कि उसके ऊपर आरोप लगाया कि यू आर अ थीफ, मतलब तुम चोर हो, लाइक दैट. और फिर कन्नगी ने क्या किया? कन्नगी ने श्राप दिया था. ओके, कन्नगी हैज एक्चुअली गिवन यू नो अ कर्स टू दैट पर्टिकुलर रूलर एंड दैट पर्टिकुलर टेरिटरी. सो ये कन्नगी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, यू नो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है साउथ इंडिया में. ठीक है, सो लाइक सेंगुट्टुवन ने क्या किया? ही ब्रॉट द स्टोन फॉर मेकिंग द आइडल ऑफ कन्नगी, एंड लेटर ऑन, यू नो, कन्नगी वॉज बीइंग वर्शिप. ठीक है, बाद में लोगों ने कन्नगी को वर्शिप करना स्टार्ट किया ताकि मतलब कन्नगी का श्राप उन पे ना चढ़े, लाइक दैट. ओके, सो देयर इज अ स्टोरी लाइक दैट. सो इज दैट एवरीथिंग क्लियर व्हाट एवर वी डिस्कस टिल नाउ? चेरास के बारे में, ठीक है, दे रूल्ड ओवर मॉडर्न पार्ट्स ऑफ केरला. देयर कैपिटल वाज लोकेटेड एट वंजी, एंड इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स आर टोंडी एंड मुसिरी. देन Pugalur inscription, okay, that belongs from the 1st century AD, has reference to the 3 generations of Chera rulers. Then this Padirupattu also provides information about Chera kings. What is Padirupattu? Padirupattu is a literary source. And important rulers के नाम क्या है? This is Perum Soru Odiyan Cheralathan. Okay, then we have Imaya Varambam, okay, Nedun Cheralathan. Then we have Cheran Senguttuvan. Okay, he is the greatest king. Greatest क्यों है? क्योंकि इलंगो अडिगल ने जो लिखा है शिलापतिकरम, ठीक है, शिलापतिकरम में मिलिट्री एक्सपेडिशंस के बारे में लिखा गया है सेंगुट्टुवन का. ठीक है, तो सेंगुट्टुवन के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है हमें. ठीक है, वी गेट मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट सेंगुट्टुवन. ओके, एंड सेंगुट्टुवन एक्चुअली ब्रॉट द स्टोन फॉर मेकिंग द आइडल ऑफ कन्नगी. ओके, दैट्स द थिंग. Is that all right? Okay. Now we will discuss about Pugalur inscriptions. Okay. जैसे हमने अभी डिस्कस किया, Pugalur inscription से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है 3 generations of Chera rulers के बारे में. ये एक पिक्चर है Pugalur inscription का. You see like this is a stone, और स्टोन के ऊपर लिखा गया था उस टाइम पे, and whatever they have written, that is still available for us to read, but many of us cannot decipher what is written. ठीक है, बहुत सारे लोग हम में से नहीं पढ़ पाते, but like there are historians who have been putting lot of effort, and basically, you know, like these things are written in Tamil language. कौन से language में? Tamil language. ठीक है, तमिल जो है it is being spoken in Tamil Nadu and in many parts of South India, and it is that's why people are able to read it. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया, we have some classical languages in India. Okay, so can any one of you tell me how many classical languages do we have in India? कितने classical languages हैं हमारे पास? Just tell me the number, then I'll ask you the name of classical languages. Riya Pathak has answered 5.
बट देर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस. कितने हैं? 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है. ओके, व्हाट आर दे? 4 साउथ इंडियन लैंग्वेज है. कितने? 4 साउथ इंडियन लैंग्वेज है. एक संस्कृत है, ओके, एंड एक ओडिया है. वन इज ओडिया, लाइक दैट. ओके, ओडिया. 4 साउथ इंडियन लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं? तमिल, ठीक है, तेलुगु, ठीक है, कन्नड़ा, ओके, कन्नड़ा, एंड वी हैव मलयालम. ठीक है, ये 4 लैंग्वेजेस है. ओके, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, ओडिया. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. रिया हैज आंसर्ड इट, आंसर्ड 5 ऑफ देम. ओके, 6 तमिल भी है. ठीक है, सो दीज आर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस. ठीक है, ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है, आपको ध्यान रखना है. तो ये जो संगम पीरियड है, ये क्लासिकल बेसिकली क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज माना जाता है जो बहुत पुराने हैं एंड उनके बारे में कुछ ना कुछ लाइटरेरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रिटन फॉर्मेट में. दे शुड बी मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड एंड उनके क्या बोलते हैं, लाइटरेरी सोर्सेस रिटन फॉर्मेट में अवेलेबल होने चाहिए, लाइक दैट. कुछ मतलब देर आर सम लाइक सम क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग अ लैंग्वेज एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, लाइक दैट. ओके, सो चेरास के बारे में अभी हमने समझा. Now let us understand about Cholas. Before we discuss about Cholas, everyone just tell me what is the symbol that the Cholas has used in their flags. ठीक है, symbol क्या है? Cholas के लिए symbol क्या है? Ria has answered first, but she has answered it wrongly. Okay. She thought Cheras. Okay, Cholas के लिए tiger. Okay, tiger was the thing. They used tiger. Okay, Cholas, Cheras, Cholas. Okay, then Cholas controlled parts of southern Andhra Pradesh and northern and central Tamil Nadu. ठीक है, मतलब they controlled parts of southern Andhra Pradesh, southern part of Andhra Pradesh and northern and central part of Tamil Nadu. ठीक है, सो आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बॉर्डर में वहाँ पे वो करते थे. मतलब लाइक देयर दैट टाइम, उस टाइम के जो बॉर्डर थे और अभी का जो बॉर्डर है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. ओके, नाउ अभी मतलब लाइक हम जब बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब जैसे इंडिया में हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स है, 28 स्टेट्स आर देयर. ठीक है, सो रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ? दिस हैज हैपेंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस ऑल्सो. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन साउथ इंडिया दे वर डिवाइडेड. उनका जो पॉलिटिकल बाउंड्री का जो डिमार्केशन हुआ, इट हैपेंड on the basis of the languages that they speak. Geographical territory, मतलब like जो geographical वो है, मतलब features है, they also formed a part of like demarcation of boundary and special economic circumstances. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं that are taken into consideration while demarcating the boundary of a particular state. ठीक है, so Cholas controlled parts of southern Andhra Pradesh and northern and central Tamil Nadu. Then when we talk about core area, okay, when we talk about core area of the Cholas, they are Kaveri Delta and then it is later known as Chola Mandalam. ठीक है, मतलब उनका कोर एरिया मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, मतलब दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर दे हैड द स्ट्रॉन्ग होल्ड, that is Kaveri Delta and it was later known as Chola Mandalam. Okay, it was later known as Chola Mandalam. And इनका कैपिटल कहाँ पे था? Their capital was located at Urayur. Okay, capital was located at Urayur and later on it was shifted to another place that is known as Puhar. ठीक है, पहले इनका कैपिटल उरायूर में था. ठीक है, it is a place in the region where Cholas have ruled. Later on they have shifted their capital to Puhar. This is another place where Cholas have ruled. Basically लोग अपना कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट करते हैं? जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है उनका. दूसरी चीज़ है जहाँ से उनको पॉलिटिकल एडवांटेजेस मिलता है, जोग्राफिकल एडवांटेजेस मिलता है, जहाँ से वो बाकी जगहों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और जहाँ पे रहने में उनको कम से कम खतरा हो. ओके, सो लॉट ऑफ द थिंग्स दैट आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिसाइडिंग वेयर शुड बी द कैपिटल. ठीक है, सो पहले उनका कैपिटल था उरायूर में, देन इट वाज शिफ्टेड टू पुहार. ओके, देन करिकला. ठीक है, करिकला एक फेमस किंग थे उस टाइम पे. ठीक है, ही वाज वन ऑफ द फेमस किंग. ठीक है, और इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट करिकला फ्रॉम
Pattina, like this is Pattina Pallai, okay? We get the information about Karikala from Pattina Pallai, okay? It is very important for us to remember कि जो Karikala है, he is one of the Sir. yes, Kritika. सर इट्स पट्टीना पाले तो बता रही हूँ मैं उससे बस ये हेलो सारी चीज Yeah, I'm उसमें getting, भी like voice from two people actually. Kritika, can you please repeat it? 19 से सर इट्स पट्टीना पाले Okay, Pattina 19 Pallai. Okay, Kritika, thank you so much. Okay, Pattina Pallai. Okay, so Kritika, are you from Tamil Nadu or like Andhra Pradesh? Okay, she is from Tamil Nadu. That's why she is able to pronounce it better than me. Okay, so thank you so much, Kritika. It is Pattina Pallai. Okay, Pattina Pallai. Then we have Battle of Veni. Okay, there is a battle which is known as Battle of Veni. Then Karikala defeated confederacy of Cheras and Pandyas plus minor chieftains. ठीक है, Karikala जो है मतलब he is a famous king. ओके, ही हैड डिफीटेड अ कॉन्फेडरेसी. कॉन्फेडरेसी का मतलब होता है जहाँ पे अलग अलग किंग आपस में मिल जाते हैं. ठीक है, मतलब लाइक वो अपने अपने टेरिटरी में रूल कर रहे हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, बट द थिंग इज दे कम टुगेदर यू नो फॉर मेकिंग अ लार्जर अलायंस. ठीक है, सो करिकला ने क्या किया, व्हाट करिकला हैज डेड, करिकला हैज डिफीटेड अ कॉन्फेडरेसी ऑफ चेरास, पांड्यास एंड माइनर चीफटेन्स. मतलब जो छोटे मोटे जो रूलर्स थे उन सब की कॉन्फेडरेसी को एक साथ हराया. किसने? करिकला ने. दैट्स व्हाई करिकला इज अ फेमस किंग. ओके, दैट्स व्हाई करिकला इज अ फेमस किंग. देन ही रिक्लेम्ड फॉरेस्ट लैंड फॉर यूज इन एग्रीकल्चर. ठीक है, सो ही रिक्लेम्ड फॉरेस्ट लैंड फॉर यूज इन एग्रीकल्चर एंड इट लेड टू द प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन. ठीक है, जिसके वजह से वो रीजन बहुत प्रॉस्पेरस हुआ. ठीक है, देन ही बिल्ड ओके कल्लनाई डैम. ठीक है, ही बिल्ड कल्लनाई डैम विच इज नाउ नोन एज ग्रैंड एनिकट डैम. ओके, अक्रॉस द कावेरी रिवर. ठीक है, तो मतलब चोलास के टाइम पे, ठीक है, चोलास के टाइम पे दिस कल्लनाई डैम वाज बिल्ड. ओके, and later on it is named as Grand Anicut Dam. It is across the Kaveri River. Kaveri River is one of the South Indian rivers. Okay, and he founded the port city of Puhar. ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, earlier the capital was at Urayur, later on it was shifted to Puhar. Okay, so he founded the port city of Puhar, identical with Kaveri Pattanam. Okay, identical with Kaveri Pattanam, and constructed 160 kilometer of embankment across the Kaveri River. ठीक है, कावेरी रिवर के साइड में उन्होंने बांध बनाया. कितना? 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था. ठीक है, किसने? दिस करिकला ने बेसिकली. ठीक है, ही फाउंडेड दिस पर्टिकुलर पोर्ट सिटी. मतलब ये पुहार को मतलब वाई ही हैड मेड द कैपिटल इन पोर्ट सिटी, बिकॉज जब पोर्ट के आसपास होता है तो दे गेट लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स ऑल्सो, क्योंकि वहाँ से दे कैन कंट्रोल द शिप्स, नेवीज एंड ऑल. ठीक है, like that they can have like trade ties with other countries with whom they are having the trade through this maritime route and all. तो इसलिए. ठीक है, so is everything clear about Cholas? Everyone just let me know. Sir, Yes. what is it about Kaveri Pattanam? Identical with Kaveri Pattanam? What does this mean? Basically Kaveri Pattanam is a location. ठीक है, in the southern region in the present day. ठीक है, Kaveri Pattanam is a place. ठीक है, and this Kaveri Pattanam is similar, this particular place is similar with Puhar, similar in the sense coastal location. ठीक है, distance from the coastal location and matlab like geographical features like that. Okay, so like it is similar with that particular thing, matlab location wise, strategic importance wise, and matlab like we can think of some other areas also. matlab like economy wise, like people who reside in the coastal areas, उनका जो important economic activity है, एक तो होता है fishing, दूसरी चीज़ होता है trading. ठीक है, trading through sea routes and all, and कुछ locations ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब tourist destinations होते हैं. मतलब you understanding, मतलब economy is based mostly on the geographical location of a particular place. तो इसीलिए
So we say that Puhar is identical with Kaveri Pattinam. Okay, Prerna, is that clear? Okay, so you're saying that Kaveri Pattinam, what is Kaveri Pattinam today, Puhar was back then. Yeah, means like it is like that. Today, in the sense like its location, its importance, economic importance in the southern region, like that. So वही है, ठीक है, मतलब like that's the thing. So having understood this about Cholas, let us understand little more. Okay, we will understand now about Pandyas. Okay, we have studied about Cheras, we have studied about Cholas. Now we will study about Pandyas. So can any one of you tell me what is the symbol, okay, that is associated with Pandyas? Okay, symbol is fish. Okay, so many of you have answered: Ravneet, Swati, Kanika, Manu, Neha and Kritika. Okay, symbol is fish. Okay, so we are now going to understand about Pandyas. Okay, so they ruled in the region which is present day southern Tamil Nadu. Present day में जो southern Tamil Nadu है, उस वाले region में Pandyas ने rule किया था. Okay, there Pandyas had ruled. Okay, then where was their capital located? Okay, so their capital was located at Madurai, and Madurai is a place where two important sangams were held. कौन सा? First and third. ठीक है, first and third संगम कहाँ पे हुआ था? मदुराई में हुआ था. First and third sangam was held at Madurai. Okay, first and third sangam was held at Madurai. Okay, that's the thing. So they ruled the present day southern Tamil Nadu. Their capital was at Madurai, and this कोरकई वॉज द मेन पोर्ट. ठीक है, मतलब पोर्ट होता है ना कि मतलब जहाँ से वो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, शिप्स वगैरह कंट्रोल करते हैं. सो कोरकई वॉज द मेन पोर्ट. ओके, देन दे पेट्रोनाइज द तमिल संगम. जो तमिल संगम्स हुए थे, इन लोगों ने पेट्रोनाइज किया था. पेट्रोनाइजेशन मीन्स लाइक दे हैव प्रोवाइडेड द रिसोर्सेज फॉर होल्डिंग the Tamil Sangams. They have provided resources, they have invited people from far away, they have given money, they have given the location, like that. Okay, so they had patronized. Okay, they had patronized the Tamil Sangams and facilitated the compilation of the Sangam poems. Okay, they facilitated the compilation of the Sangam poems. And the rulers, okay, the Pandya rulers actually kept regular army. मतलब like उनके पास एक regular standing army हुआ करती थी. ठीक है, बहुत सारे ऐसे rulers थे पुराने समय में, they did not have a standing army. मतलब like उनके पास हमेशा army नहीं रहती थी. मतलब जब war होता था किसी के साथ तो लोगों को बुला लेते थे. Now let us go to fight. Okay, let us defend our territory, like that. But like these people, Pandyas, they kept a regular army. मतलब जैसे अभी अगर हम बात करें India as a state, India as a country, okay, so we have Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force. ठीक है, these are the regular army, standing army. People who are recruited into the army, they stay in the defense services for the time during which they have to serve, like that. ठीक है, so these Pandyas also kept regular army. Then trade was prosperous. Okay, trade was prosperous and their pearls were famous. ठीक है, pearls क्या होते हैं? Anyone who can tell me like what we know pearls in Hindi? Hindi word pearls के लिए क्या? मोती. Okay, Riya has answered. Riya, Swati, Prapti, Bansal. Okay, you people are very good. Okay, with like vocabulary and all. So like trade was prosperous and their pearls were famous. Okay, then sati system, caste, idol worship were common. Sati मतलब क्या होता है? Sati means it is a practice in which if the husband of a married woman dies, okay, in that case the married women will also go to the funeral along with her deceased husband, and she will also die, okay, in the same this thing. मतलब जहाँ पे उनके पति को जलाया जाता है वहाँ पे मतलब like she will also die. So that is a sati practice. Okay, they used to burn themselves. Riya Pathak has used a simpler word to make it clear to other people.
ठीक है, वो अपने आप को भी अपने हस्बैंड के साथ बर्न कर देते थे, ठीक है. बट लाइक देर आर सम सम कॉन्टेंशियस इश्यूज एसोसिएटेड विद दिस. सती एक्चुअली होता क्या था बहुत पुराने समय में, ठीक है, होता ये था कि मतलब जो फैमिली सिस्टम थी, मतलब लाइक इट वाज जॉइंट फैमिली सिस्टम. कैसा फैमिली होता था? जॉइंट फैमिली. मतलब लाइक पीपल यूज टू स्टे इन जॉइंट फैमिली. मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड कजन, सिबलिंग्स, एवरीवन इज स्टेइंग इन द सेम होम. तो उसमें क्या होता था, दी अ ब्राइड लाइक हु कम्स फ्रॉम अनदर फैमिली, ठीक है, दूसरी फैमिली से किसी को आप शादी करके अपने यहाँ पे लेके आते हो, यू ब्रिंग अ ब्राइड इन योर होम, ठीक है, एज अ वाइफ. नाउ अभी मान लो कि देर इज अ फैमिली वेयर लाइक वी 4 ब्रदर्स आर देयर. एक फैमिली है, 4 भाई है बड़े बड़े, ठीक है, 4 ब्रदर्स आर देयर. उनके पेरेंट्स भी रह रहे हैं, बट देयर पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर. ये 4 ब्रदर्स की अगर मैरिज हो जाती है, लेट्स कंसिडर दिस इज ABCD, ये 4 अलग अलग ब्रदर हैं. इनकी अगर मैरिज होगी तो मतलब लाइक दे विल हैव अ वाइफ, ABCD लाइक दैट, स्मॉल करके आई एम जस्ट राइटिंग, ठीक है, दे विल हैव अ वाइफ. अब क्या होता है, प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक उसके लिए भी बहुत सारे लाइक तरीके हैं. मतलब आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ इट, बट आई एम गोइंग टू एम्फसाइज ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, दैट विल मेक यू क्लियर अबाउट द सती सिस्टम. तो मान लेते एक फैमिली है जहाँ पे लाइक पीपल आर स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम. 4 ब्रदर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर मैरिड, दे हैव देयर ओन सन्स ऑल्सो. अब क्या है, प्रॉपर्टी का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर मान लो कि एक ब्रदर की डेथ हो जाती है, तो ये 3 ब्रदर क्या सोचेंगे कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हमारे बीच में आए, ये जो दूसरे घर से लड़की आई है इसको कोई प्रॉपर्टी ना मिले. ओके, व्हाट दे वुड वांट कि मतलब जो प्रॉपर्टी हमारे पेरेंट्स की है वो हम तीनों में ही मिलना चाहिए, इसको ना मिले जो दूसरे घर से आए. ओके, इट वाज द टेंडेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. अगर इसको नहीं मिलेगा, अगर इफ शी सर्वाइव्स, ओके, इफ शी सर्वाइव्स शी विल क्लेम प्रॉपर्टी. अदरवाइज like how she is going to survive in this particular world, and being a widow is itself was itself considered as a curse. तो क्या बोलते थे कि सती कर लो, ठीक है, सती कर लो मतलब आपके हस्बैंड तो मर गए हैं, ठीक है, पति परमेश्वर होते हैं, हस्बैंड मर गए हैं, आप जी के क्या करोगे? व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू ऑल्सो डू सती. सती का मतलब है आप अपने हस्बैंड के साथ जल जाओ, मर जाओ, लाइक दैट. ओके, क्योंकि अगर आप नहीं जलोगे, मरोगे, तो सोसाइटी आपको लाइक आपके ऊपर नज़र डालेगी, कुछ ना कुछ बोलेगी, लाइक दैट. सो एक्चुअली दिस पर्टिकुलर पर्सन वॉज मेड टू गो टू दी फ्यूनरल हर सेल्फ, मेड टू बर्न हर सेल्फ, लाइक दैट. सोशल प्रेशर होता था बहुत ज़्यादा. एंड एक्चुअली मेन कारण क्या था कि मतलब ये जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है ताकि इन ब्रदर्स के पास चला जाए. ओके, सो दैट वाज द थिंग. मीन्स लाइक दिस इज वन ऑफ द कॉन्नोटेशन. आई एम नॉट सेइंग दिस वाज द ओनली वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी. देयर वाज नोन एज प्राइमोजेनिचर, बहुत सारे टाइप की चीज़ें होती थी सोसाइटी में. सो इज दैट क्लियर अबाउट द सती सिस्टम? सती सिस्टम के बारे में समझ में आया आपको? एवरीवन जस्ट लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड अबाउट सती सिस्टम. Okay. Okay. Pallavi has given a this is thumbs up. That's good. Okay. Neha, Manu, Swati Giri. Okay, that's all right. So sati, caste, idol worship. These were common, and widows were treated miserably. ठीक है, widows were treated miserably. क्योंकि लोगों को पता था मेरे हस्बैंड अगर मर जाएंगे तो मेरे साथ ना बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करेंगे, तो इससे अच्छा है मैं भी मर जाऊँ. Okay, that was like that. Okay, I'm not saying any one of you have to do like that. It's illegal now. Okay, sati system was banned, and there was a person, Raja Ram Mohan Roy. Okay, Raja Ram Mohan Roy, who is a very important figure in the cultural renaissance in India. Okay, he has put lot of effort. Okay, he has put lot of effort to ban sati. Okay, to make sati legal. ठीक है, and they adopted, these Pandyas people adopted the Vedic religion of sacrifice and patronized the Brahmin priest. Okay, they patronized the Brahmin priest, and their power declined. Okay, their power declined with the invasion of the tribe that is known as कालाभ्रास. ओके, एक ट्राइब थे, ठीक है, एक ट्राइब थे. ट्राइब मतलब एक आदिवासी ऐसे लोग थे, ठीक है, इनको बोलते कालाभ्रास. इन्होंने क्या किया, इन्वेड किया था पांड्यास के ऊपर, और उसके वजह से पांड्यास की पावर बहुत कम हो गई थी. ओके, सो रिया पाठक हैज गिवन
an important information for you all, that is she is saying that Raja Ram Mohan Roy, triple R, okay, so he has founded Brahmo Samaj. Okay. Then after the Sangam age, this dynasty lost its significance for more than a century, only to rise once again at the end of the 6th century. ठीक है, संगम एज के बाद इस डायनेस्टी का जो सिग्निफिकेंस है वो लॉस्ट हो गया था, बट अगेन यू नो दे यू नो रेज टू प्रोमिनेंस एट द एंड ऑफ द 6th century. 6th century के बाद में वो प्रोमिनेंस में आए थे. ठीक है, so let us do one thing. We have discussed about, you know, Cheras, Cholas and Pandyas. These three important themes have been discussed. Okay, and I have already shared the PPT with you. मैंने already PPT management के साथ share किया है. They'll be sharing with you. You may be getting it soon, or you may have already received it. Okay, so the thing is, let us stop the discussion here itself today. Okay, tomorrow we will continue this discussion. What we will continue this particular discussion, which is, you know, South like we will discuss about these Sangam period. Okay, so Kritika says like you know, already received PPT. Okay, that's all right, thank you so much. Okay, so we will continue the discussion about it, and after this we have some more important topics. Yes Sonam, you have something to say? यस सर. सर वो ये पूछना था, जैसे शिशु नागवंश का शुरू काल में दे रखा है 412 BC, उसका एंड. ओके ओके ओके, सो विल डिस्कस अबाउट इट. ठीक है, शिशुनाग के एंड के बारे में लाइक यू वांट टू डिस्कस. और सर नंद वंश जो है उसका एंडिंग पीरियड है, शुरू का नहीं पता. ओके, नंदास एंड शी हैज आस्क्ड अबाउट शिशुनाग. ठीक है, यस सर. नंदा के एंड के बारे में नहीं है या शुरू के नहीं है? नंद बारे में नहीं है और शिशुनाग के एंड के. मोर थिंग, ओके, टुमारो आई हैव अ लेक्चर विद यू. जनरली सैटरडे को क्लास नहीं होती थी. ठीक है, बट लाइक I have been given a target to finish by Saturday, this Saturday. So like, you know, tomorrow we will have a lecture, and the thing is lot more is remaining in ancient history. Okay, so I'll discuss with the management what I have to do. I mean, like whether I'll be having more classes after Saturday or not. Okay, but like on Saturday, tomorrow we will discuss some of the important things, and with this, like, you know, like my assignment, okay, in your batch will be finished. Okay, so anyone who is having any query, like after my classes, once my classes are over, okay, once my classes are over, and okay, like after then, if you have any queries, what you can do, like I may not be here, okay, in the institute, what you can do, you can simply drop me an email. Okay, you can simply drop me an email. So I'm just writing down my email address. Like this is another email that I created. Okay, that is Jahidul. You have to write my name, okay, and add one thing, upsc@gmail.com. Okay, so my official email may not be working then, but like any one of you, you know, facing any difficulty with history, okay, if you want some help or anything, you can simply mail me at zahidul@upsc@gmail.com. okay, I'll be there. Like I'll try to answer your queries. Okay, that's the thing, my name plus UPSC, okay, like that, @gmail.com, simple. Okay, so like if you need some help related to history or maybe with any general studies topic, you can, you know, be in touch with that, okay, with me. Means like otherwise, like there will be, you know, management people over here, they'll be helping, but anyone who wants, you know, some help, so they can simply reach out in this. Okay, so medieval history, I'm not sure who is going to take the medieval history and all. Okay, so Ria, I'm really sorry, I'm not sure who is going to take medieval history. Okay, so I just had an assignment of covering ancient history like here in the institute in your batch. Okay, so thank you so much everyone for attending this session and being participative over here. Okay, I hope like everyone will be studying more, they'll be learning, they'll be revising, and take care of yourself. Okay, take care of yourself, keep learning. Okay, okay friends, bye bye. With this, what I am doing, I am just ending my session, okay, from this side.